Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Gaura Dhawanlal and with me is my co-anchor Vibhuti Kumar Mishra. धन्यवाद गौरा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र के आज के अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक प्रकाश चावला। प्रकाश जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और अब अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी गौरा धवनलाल। Thank you, Vibhuti, and Mr. Chavla, welcome to the program. Thank you. Listeners, a quick look at the headlines. RBI keeps repo rate unchanged at 6.5% for the 10th time in a row. Domestic benchmark indices end with marginal losses. Sensex declines over 160 points. Nifty settles below 25,000. And global crude oil prices decline. Brent crude trades at $77.09 per barrel. रेपो दर 6.5% पर बरकरार। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 10वीं बार कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया। प्रमुख घरेलू शेयर बाजार में मामूली गिरावट। सेंसेक्स में 160 अंकों से ज्यादा की गिरावट। निफ्टी 25,000 के नीचे हुआ बंद और ब्रेंट क्रूड की कीमत $77.09 प्रति बैरल के स्तर पर। Our first headline of the day, the Reserve Bank of India today decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% for the 10th time in a row. Consequently, the standing deposit facility STF rate remains at 6.25% and the marginal standing facility MSF rate and the bank rate at 6.75%. The RBI has maintained status quo on benchmark interest rates since February 2023. The policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF rate, remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is the MSF rate and the bank rate, they stand at 6.75%. The Monetary Policy Committee MPC also decided to change the monetary policy stance to neutral and to remain unambiguously focused on a durable alignment of inflation with the target while supporting growth. These decisions are in consonance with the objective of achieving the medium-term target for consumer price index CPI inflation of 4% within a band of plus or minus 2% while supporting growth. The RBI statement issued today also mentioned that the real gross domestic product GDP registered a growth of 6.7% in the first quarter of the financial year 2024-25, driven by private consumption and investment. The MPC met on the 7th, 8th and 9th of October. The next meeting of the MPC is scheduled from the 4th to the 6th of December 2024. Prakashji, the MPC decision expected or people were expecting a decrease? Well, it's on the expected lines. Despite the fact that the inflation for August was below 4%, which is the target of the RBI. But the RBI didn't want to take a chance because there's still a lot of volatility in the global scenario. Okay. And so RBI would ensure that this 4% target, if you see the policy statement as you have read yourself, they are saying unambiguous focused on a durable alignment with the target. Right. So they wanted to
They wanted to keep it. They wanted to keep it to the task. Right. And but one thing they have done it, what was expected, besides the policy rate which has been kept unchanged at 6.5%, there is something very important, which is the stance. Stance is very important for a common person. The stance is that what is the RBI's thinking, Okay. and going forward, what's going to do. Stance, what they have done is, when they say they are taking a neutral stance, what it means is they have changed from a stance which earlier was withdrawal of accommodation. Generally there are stance, accommodation, withdrawal accommodation, neutral. So RBI, to rein in inflation, has been following for quite some time a stance, withdrawal of accommodation stance. Now that the inflation, what is called the disinflation, Governor Das said disinflation, we are well on the way to disinflation, and we in fact, the overall target for this financial year, inflation target, according to RBI, not target is of course 4%. The projection is 4.25. Right. Overall year. So Right. that's why RBI didn't want to take a chance. Right. So the stance has been changed to neutral. So that has sent a kind of a positive signal that, okay, if not now, for the next few quarters, the cut could be expected. Cut in the interest rate could be expected in Right. the next few quarters, if not, obviously, that didn't happen today. Right. So do you think, you said despite inflation being maintained in the band and no worries on that concern, there are a couple of crops, and because of that, the real inflation which is being felt, the expense basket and consumer household budgets are still feeling the pinch. So then maintaining status quo could also be with respecting that, to say that, okay, we want to maintain it despite the fact that we could decrease it. Well, the RBI has to draw a balance between growth and inflation. Right. Okay, if you tight the monetary policy too much, then there's a growth concern. So they have to find a balance. RBI has been fighting this war against inflation for the last 2 years, and they are successful. They are successful. So when it comes to, that's why, answering your question, there are still concerns when it comes to expenses of the common man. Right. To address those concerns, RBI has ensured that they don't want to go too fast. Right. That's It's always a tightrope, and I think a stellar job so balance far. between Right. the growth and inflation. Right. प्रकाश जी, आरबीआई की एमपीसी की जो आज बैठक हुई, इसमें कुछ और अन्य फैसले भी लिए गए और कुछ तरह की चेतावनी भी जारी की गई कि जो गैर बैंकिंग संस्थाएं हैं वो ईमानदार रहें, प्रथाओं का पालन करें। तो क्रेडिट कार्ड को लेकर के लोगों को इसमें आगाह किया, कंपनियों को। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो कीमतें हैं उस पे जो है नजर काफी कड़ी है आरबीआई की। तो इसको लेकर समग्र रूप से, साथ ही एक यूपीआई लाइट का जो है उसका भी एक बढ़ाया गया है। तो क्या कहेंगे? दो चीजें, एक तो पॉलिसी से रिलेटेड है जो आपने जिक्र किया कि भाई उन्होंने कहा हमारी नजर बनी हुई है, हमारी पैनी नजर है दामों के लिए, क्योंकि आरबीआई का जो फोकस है पिछले 2 साल में वो इन्फ्लेशन पे कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है, वो इन्फ्लेशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे और काफी सक्सेस भी मिली है उनको। और उस सूरत में उन्होंने ये कहा कि हमारी इस पे पैनी नजर है, बनी रहेगी, और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी स्टैंड को चेंज करके, जो मतलब बोला ना न्यूट्रल है ना, मतलब बीच वाली बात है जी। हम इसका मायने ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी आरबीआई। जैसे अब देखिए ना, इस टाइम जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, मिडल ईस्ट में है या यूरोप का जो सिचुएशन है, वो कुछ भी हो सकता है ना, तो आरबीआई को तो तैयार रहना पड़ता है ना। इतनी बड़ी इकोनॉमी है हम लोग, हमको तो तैयार रहना पड़ता है। तो उस सूरत में आरबीआई अपने को तैयार रखना चाहता है। अब आपने दूसरा जिक्र किया कि कुछ कंसर्न शो किए आरबीआई ने एनबीएफसी को लेकर। जी हाँ। ये जो एनबीएफसी होती है ना, ये कई बारी ग्रोथ टारगेट इतना चेज करते हैं, वो अपना इसको रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं, अवॉइड कर जाते हैं। तो आरबीआई उन्होंने एक वार्निंग दी है, भाई अपने आप सेल्फ रेगुलेट कर लो, फिर नहीं तो हमको आना पड़ेगा। तो ये एक सिग्नल दिया है, क्योंकि उल्टे सीधे लोन दे देते हो आप, क्योंकि आपको ग्रोथ टारगेट अचीव करना है, तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज आरबीआई कैन नॉट अफोर्ड इट। Right.
जी, खास बात यह है कि ठीक है, जो है लोन कोई महंगा नहीं होगा, लेकिन अभी हाल में जो है अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। कुछ देशों ने इसका अनुसरण भी किया। तो अगर हम भारत को देखें, इसके अनुसार सोचें, तो ये संभव था या नहीं था, तो क्यों, इसको किस रूप में देखते हैं आप एक आर्थिक विश्लेषक के तौर पे? क्या आपका नजरिया है? नहीं, जो फेडरल रिजर्व ने किया 25 बेसिस पॉइंट पे किया, स्टार्ट किया 25 पे, 50 की एक्सपेक्टेशन थी, 25 बेसिस पे किया। अब उम्मीद की जा रही है वो लोग उस लाइन पे आ गए, मतलब वो काटते रहेंगे इंटरेस्ट रेट। अब हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो परिस्थितियां हैं वो डिफरेंट हैं। हमको अपना ध्यान देखना है। हमारी जो इकोनॉमी की जो बैलेंस है आपस में हमारी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो उस सूरत में हमको अपना ध्यान रखना, हमको ऐसे फॉलो नहीं कर सकते कि फेडरल रिजर्व ने किया तो हम भी करें जी। ऐसे तो कल चाइना ने भी किया। तो हमको अपना बैलेंस देखना है। लेकिन अब उसका हाल हम देख रहे हैं चाइना में क्या। हाँ, तो क्या हुआ जी। लेकिन जो स्टांस में चेंज किया वो एक तरह का सिग्नल तो दे रहे ना कि हम तैयार हैं, लेकिन अभी इतनी हड़बड़ी में नहीं करेंगे ये काम। Right. हम ऐसा नहीं करेंगे कि फेडरल रिजर्व ने कर दिया हम भी कर दें, ऐसा नहीं करेंगे। Wanting also to draw your attention to, we've traditionally been a country where people save. And I think wanting to make sure that savings are there so that more credit can be given, banks have more money to give. So, so how will this affect that? Well, savings in any case, see, somebody lends, somebody borrows. If you want to borrow from the bank, I go to bank with my fixed deposit. That's why you are borrowing. So again, there's a question of balance. In the pursuit of controlling inflation in the last 2 years, the interest rates, I'm talking about the interest rates to the depositors, Okay. have gone up in the last 2 years. Right. We were at around 5.5. We had come down to even 5.5 FDR rates. Today we are 7%. Right. Today if you walk into a bank branch, they'll happily give you 7% interest rate for a 2-year deposit. Okay. So that's a good motivation for you to go and save. There's still a strong segment that believes in FDs actually. But it's the safest thing to do. It's right. the safest thing to do. And most of the banks in India are 70% of the banking in India is the government banks. Right. Right. So, and 7%, mind you, compounding. If you have a 5-year deposit FDR, if you have a 3-year FDR, 7% and then compounding interest. So it's not too bad for It's such not too safety bad. that it is offering. And if you have inflation at 4%, 7% interest rate, so then your real interest rate would be 3%. Right. Plus minus a little taxation if those are in the Okay. bracket. Yeah, but at least otherwise, 2.5, yeah, which is good enough. which is right. शेयर बाजार का हाल जानते हैं। प्रमुख घरेलू सूचकांक आज दिन के कारोबार में बढ़त हासिल करने के बावजूद मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 168 अंक यानी 0.2% गिरकर 81,467 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 31 अंक यानी 0.1% गिरकर 24,982 पर बंद हुआ। बीएसई के व्यापक बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों 1% से अधिक बढ़े। Domestic benchmark indices today ended with marginal losses, retreating from gains secured in intraday trade. At close, the Sensex declined 168 points or 0.2% to close at 81,467. Similarly, the Nifty fell 31 points or 0.1% to settle at 24,982. In the NSE, 69 companies hit their 52-week high, 18 hit their 52-week low. The broader market at the BSE outperformed the benchmark indices. The mid-cap and the small-cap both rose over 1%. In the Sensex index, 15 out of 30 companies ended higher. The top gainers today were Tata Motors, which gained over 2%. SBI Bank increased 1.9% and Reliance added 1.8%. Conversely, the top laggards today were ITC, which declined more than 3%, Nestle lost over 2.5%, and Hindustan Unilever fell more than 1.5%. In sectoral indices at the BSE, 16 out of 20 sectors logged gains. The top gainers today were Realty, which rose 2.2%, Healthcare gained over 1.5%, and Power as well as Consumer Discretionary added over 1%. Meanwhile, the top laggards were FMCG, which shed 1.3%, Energy slipped 0.7%, and oil and gas lost 0.6%.
The overall market breadth at the BSE was positive as out of 4,049 companies, shares of 2,705 advanced, 1,248 declined, and 96 remain unchanged. We want to understand from you that, yesterday the markets went up, today they started well, and I think closed marginally lower, but by and large many shares saw gains and even sectors saw gains. So the global situation still remains uncertain. Yesterday the hike was really good. The Sensex really, at least not recovered everything despite the losses, but did do a good recovery. What do you think was the reason for this? And even today the trend was not bad. No, actually, if you see the hallmark of the stock market, including that of India, has been a very high level of volatility. At the end of the day, the market closed in the red. In the opening, it was up almost 500 points. So the intraday, from a day's high of, the intraday change was something like 700 points in the Sensex, which is quite a bit of volatility. And this volatility has arisen because of the global volatility. So profit booking? Not profit booking. Mm-hmm. There is no profit booking as such. Because yesterday they really went up. No. But the global, the Chinese sentiment has spooked the investors. Okay. So the foreign institutional investors have been selling from different markets. China announced with a lot of fanfare a stimulus. But that stimulus in a day or so fizzled out. So the market again, and for a day or so, the market recovered. But that China's stimulus was initially seen as because Chinese economy has been doing bad. So there was this feeling that the China's stimulus package is leading to a whatever it takes moment for China. That we need to somehow fix this economy, whatever it takes. So that whatever it takes moment did not last. It just lasted for a day. And again it spooked investors all over the world. So that's why today's feature of today's market has been very high level of volatility, right, in sync with the global trend. Okay. तो इस तरह की खबरें लगातार आती हैं कि इजराइल जो है वो कभी पे ईरान पे हमला कर सकता है. इसके बावजूद भी हम उतार चढ़ाव और स्थिरता देखते रहते हैं. तो अगर हम आगे के दिनों की बात करें, एक अनुमान की बात करें, तो हम आगे किस तरह का अनुमान देख पाएंगे? हम आज ये भी देख रहे हैं कि जो स्मॉल कैप है बीएसई का, उसमें काफी अच्छा इसका रहा. तो अगर हम अनुमान की बात करें, जो निवेशक हैं उनको एक सलाह की बात करें, तो आप क्या कहेंगे? कॉशन, मतलब कॉशन को आप क्या कहेंगे कि सावधानी बरतिए जी. क्योंकि मार्केट में अभी दो कंसर्न है. एक तो जिसको जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट जिसका आपने जिक्र किया, इजराइल का, मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही. दूसरा वैल्यूएशन का. हमारी मार्केट जो है बड़ी अच्छी है. इंडिया स्टोरी आज जैसे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जिक्र किया, बड़ी रोबस्ट है, बड़ी रेजिलिएंट है, बड़ी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में चल रही है. लेकिन हमारी जो मार्केट्स है ना वो थोड़े से आगे बढ़ गई. तो उस सूरत में सावधानी बरतने का एक मंत्र होना चाहिए. और उस सावधानी बरतने के कई रीजन है कि एग्जूबरेंस, इरैशनल एग्जूबरेंस नहीं होनी चाहिए. और ग्लोबल सिनेरियो अनसर्टेन है, जिसका अगेन दोबारा से गवर्नर दास ने अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट में भी जिक्र किया है कि जो जियो पॉलिटिकल रिस्क है हमको वॉचफुल रहना पड़ेगा. तो अगर गवर्नर को वॉचफुल रहना चाहिए, गवर्नर स्टेटमेंट में दे रहे हैं, तो आम इन्वेस्टर को उनकी बात क्यों नहीं सुननी चाहिए? राइट. तो पूरा फाइनेंशियल मार्केट्स को कैटर करते हैं ना. ठीक है. लोगों की एक आम जिज्ञासा को आपके सामने में रखता हूं. मान लीजिए कि अगर ये वॉर थोड़ा सा गहरा हो जाता है, स्थिति बहुत खराब हो जाती है, तो उसको देखने के बाद आप अपने शेयर बाजार को किस रूप में देखते हैं? देखिए, ऐसा प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, किसी के लिए करना भी नहीं चाहिए. हम क्या बताएं, मतलब जो आप सवाल मेरे से पूछ रहे हैं वो तो फिर बड़ी समस्या. उससे कई बारी पैनिक मोड में हम क्यों डालें अपने इन्वेस्टर्स को? हम ऐसे सूरत का क्यों जिक्र कर लें, सिनेरियो बना लें? हमको तो ये डे बाय डे, जैसा कि हमने पिछली बार देखा है कि बहुत संकट के बावजूद जो है हमारा बाजार स्थिर रहा है, मजबूत रहा है,
उसमें उस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि पूरे अभी आपने चाइना को देखा। बिल्कुल सूरज, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी। हुआ ये पीछे जो साल भर से ये इवेंट्स चल रही है, अब अक्टूबर 7 को तो साल हो गया, अक्टूबर इजराइल का जो लेटेस्ट वो है, तो साल भर में क्या हुआ है, एक लिमिटेड वो चलते रहे, लेकिन क्या हुआ कि अब थोड़ा बढ़ गया है, पिछले 10-15 दिन में बढ़ गया है। अब क्या है कि कंसर्न तो है, बल्कि सर अगर साल भर का हम देखें तो हमारे बाजार ने काफी बढ़िया, हमारा बाजार नहीं, पूरे मार्केट में कोई ऐसी उथल पथल नहीं हुई इस वार की वजह से, और कारण रहे होंगे इस वार की वजह से। अभी आप जिक्र करेंगे अपनी आगे बुलेटिन में, जो हम लोग क्रूड ऑयल का जो हम है, क्रूड ऑयल बड़े बड़े उल्टा डाउन चल रहे थे, ये जो पिछले 5-7 दिन में थोड़े चढ़े। In fact, constantly all experts have suggested on our program repeatedly that don't look at such short term or 2-day or 3-day. It's a steady market, good GDP, good figures. Look at the long term or medium term, a lot of things balance out, No, what happens is, from the medium and the long term and the short term point of view, an event like Middle East developments are crucial, are critical. Because they need to be considered, they need to be taken care of. But the point is, we are a part of the global market today. Whatever developments, after all, if financial institutions are selling in India for the last, you talked about a few shares today did very well, despite the Sensex showing a little bit of. Why it so happened? Because the Sensex is calculated based on the large cap heavyweights. Right. Now today heavyweights are lost, but the mid income or the small cap, mid cap, they have done well. So what's called the breadth of the market has not really gone in for a spook. True. So what has happened? Global developments would impact us. Our resilience has to be preserved. That is why our policymakers like RBI, or we have to be nimble about it. True. Watching the developments all around. रुपया का हाल जानते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया बिना किसी बदलाव के 83 रुपये 96 पैसे पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 102.61 पर कारोबार कर रहा है। और एशिया और यूरोप के बाजार का हाल जान लेते हैं। एशिया के प्रमुख सूचकांक आज मिले जुले रुख के साथ बंद हुए। जापान का निक्केई 0.8% के मुनाफे के साथ बंद हुआ। वहीं सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.5% की बढ़त देखने को मिली। इसके उलट चीन के संघाई कंपोजिट में 7% से ज्यादा ये लुढ़क गया और हांगकांग का हैंगसेंग 1.4% की गिरावट के साथ बंद हुआ। जबकि छुट्टी के कारण दक्षिण कोरिया का कोस्पी आज बंद रहा। बात करें यूरोप के शेयर बाजारों की तो प्रमुख यूरोपीय सूचकांक आज अंतिम समाचार मिलने तक सकारात्मक क्षेत्र में कारोबार कर रहे थे। फ्रांस का कैक 0.28% की बढ़त, जर्मनी का डेक्स 0.27% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे और लंदन का फुटसी भी 0.26% ऊपर ये कारोबार कर रहा था। बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि चाइना पे आपका क्या कमेंट होगा, वहां के बाजार पे। चाइना का मैंने जैसे जिक्र किया कि चाइना में उन्होंने उत्साह तो बहुत दिखाया वहां की पॉलिसी मेकर्स ने कि हम अब अपनी इकोनॉमी को फिक्स करने वाले हैं, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं जिसको बोलते हैं ना आधे अधूरे लगा, मार्केट को ये लगने लगा, तो इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट है थोड़ा खराब हो गया। एक जैसे उत्साह एक बन गया ना, एंड एक्सपेक्टेशन वो मीट नहीं हुई, तो उसके सूरत में अब चाइना का जो इम्पैक्ट है, आपने जैसे पूछा मेरे से, उसका इम्पैक्ट पड़ता है मेटल प्राइसेस पे, कमोडिटी प्राइसेस, बिकॉज चाइना जो है वो बहुत बड़ा कंज्यूमर है कमोडिटी का, पूरे वर्ल्ड की डिमांड को वो इम्पैक्ट करता है। और फिर चाइना एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी है पूरे वर्ल्ड मार्केट के लिए। तो उन सूरत में ये अभी वॉलेटाइल सिचुएशन है, बड़ी फ्लूइड सी सिचुएशन है। और कमोडिटी मार्केट पे मैंने बार बार जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आज ही पॉलिसी आई है, उसका जिक्र गवर्नर दास ने भी किया आज कि जो कमोडिटी प्राइसेस जो हैं मेटल के दोबारा बढ़ने की उसके वो लग रहे हैं, तो हमको केयरफुल रहना पड़ेगा, हमको वॉचफुल रहना पड़ेगा। तो ये चाइना का जो है ना, द चाइना स्टोरी इज अनफोल्डिंग, we got to be watchful about it because it impacts, it's one of the largest economies, True. and driving the global demand.
and the supply to some extent. So वहाँ पे whatever happens has ripples for all over the world, all financial market. We got to be watchful about it. Right. A look at the U.S. markets. U.S. stocks ended higher yesterday, led by gains in technology stocks. The Nasdaq Composite rose 1.4%, S&P 500 advanced nearly 1%, and the Dow Jones Industrial Average added 0.3%. Moving to oil prices. Oil prices declined today as weak demand fundamentals and rising supply overweight concerns of supply disruption from the conflict in West Asia. In the global crude market, Brent crude was trading 0.12% down at $77.09 per barrel, and U.S. West Texas Intermediate WTI was trading 0.05 down at $73.53 per barrel when reports last came in. So the context of China being the largest, oil consumer, importer and oil demand between China and the US, they are the largest, one of the two. India is also a big consumer. Right. Crude, yes. So, and the news that, the Gulf War and the Gulf happenings over there, not really the war, but the conflict there. So, when we look at all this, do you feel that oil prices, and you said they'd fallen earlier and now is there anything to really worry about? Are they responding based on expectations that, all these things were happening? Is this expected? Well, the oil prices, of course, in the last few days have been responding to the sentiment, have been responding to the worsening sentiment in the Middle East. Right. For the last few days. Right. But the underlying situation in the oil prices has been that there is nothing great to worry. Now, again, you got to be watchful. As long as the oil infrastructure, I'm talking about the crude infrastructure, which includes oil terminals, which includes your refining infrastructure, which includes your wealth. As long as there is no damage to the oil infrastructure, there is no big cost for worry. It's not shoot up, and the oil global demand has not been great. That's why the oil prices have been docile in the last few. So even international markets don't seem very worried. No, that's why we are also driven every day on a day-to-day basis by international markets. So nothing to worry, but since the Middle East developments could cause a concern, again, we got to be watchful. Right. अर्जेंटीना की विदेश और वित्त मंत्री डायना एलेना मोंडिनो की भारत की 5 दिनों की आधिकारिक यात्रा आज संपन्न हो गई। इससे पहले अर्जेंटीना की विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक की। बैठक में अर्जेंटीना के उद्योग और व्यापार प्रमुख भी शामिल थे। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश साझेदारी बढ़ाने के तरीकों पर विचार किया। दोनों पक्षों ने ऊर्जा, खनिज, स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। दोनों पक्षों ने मजबूत कारोबारी व्यवस्था और डिजिटल प्रणाली के माध्यम से सहयोग के बढ़ते अवसरों पर भी चर्चा की। और अब सोना और चांदी का हाल जानते हैं। सराफा बाजार में सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.05% गिरकर 75,220 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.28% बढ़कर 89,060 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। Right. So I think gold is stable as expected quickly within about 10 seconds. Safe haven. When in an uncertain situation, global always the prospects also look strong because it's a safe haven. Right. That's what the gold story is. On this safe note, I think we'd like to thank you. Thank you so much for coming to our program. You are welcome. Right. And now a quick look at the headlines. Before we close, RBI keeps repo rate unchanged at 6.5% for the 10th time in a row. Domestic benchmark indices end with marginal losses. Sensex declines over 160 points. Nifty settles below 25,000. And global crude oil prices decline. Brent crude trades at $77.09 per barrel. And that's it for today's program. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.